planes and axes. Now let's discuss what are different planes and axes of movements. There are three basic planes that are used in anatomy. They are sagittal plane, coronal or frontal plane, and transverse plane. Now as you can see in the image, the sagittal plane is the one that divides the body into two halves, the right half and the left half. Coronal plane or the frontal plane is the one that divides the body again into two halves, but the anterior half and the posterior half. The third one is a transverse plane that divides the body into two equal halves, the upper half and the lower half. Now let's discuss each of them in detail. Sagittal plane. Sagittal plane को हम longitudinal plane भी कहते हैं. As you can see in the image, यहाँ पर this is the sagittal plane. ये perpendicular होता है ground के, जैसे आप देख सकते हैं इमेज में ground के perpendicular है ये plane, जो blue color का sagittal plane हमें नजर आ रहा है. And it divides the body into two halves, the right and the left half. The mid sagittal or the medial plane is in the midline. जो मिड लाइन होती है वहाँ पर मिड सजाइटल प्लेन होता है एंड इट पासेस थ्रू द मिड लाइन स्ट्रक्चर्स. बॉडी में जो भी मिड लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेदर इट इज़ द स्पाइन जिस या वर्टिब्रल कॉलम हम उसे कहें और द नेवल, ये मिड सजाइटल प्लेन और मीडियल प्लेन उसे सेंटर से कट करता है. बॉडी के डिफरेंट मूवमेंट्स जैसे कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इसी प्लेन में परफॉर्म किए जाते हैं. नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स. Here are few examples that are depicting the movement in the sagittal plane. The first is the flexion and extension movement of the arm and forearm. The second is the hyperextension movement of the shoulder. The flexion and extension movement of the hip joint. Flexion and extension at the knee joint. Flexion and extension of the trunk and flexion and extension of the neck. Here we can also see the dorsiflexion and the plantar flexion at the subtalar joint that can also perform in the sagittal plane. Now let's move to the coronal plane. Coronal plane, which is also known as the frontal plane. Now as you can see in the image, the frontal plane as the blue area depicting, it divides the body into two halves, the anterior half and the posterior half. This plane is perpendicular to the ground again and it divides the body as I have mentioned into anterior or the posterior half. इसे हम back या front भी कहते हैं जिसमें ये plane divide करता है body को, front section and back section. We can also say it as ventral part of the body or the dorsal portion of the body. इस plane में abduction and adduction movement perform किया जाता है. Now let's see few examples. Abduction and adduction at the shoulder joint जो कि coronal plane में perform किया जाता है. Abduction and adduction at the hip joint. Radial and the ulnar deviation जो कि coronal plane में perform किया जाता है. Similarly, eversion and inversion at the subtalar joint. The lateral flexion to the right trunk का and lateral flexion to the left जो कि हम नेक का या ट्रंक का परफॉर्म कर सकते हैं. ये सभी मूवमेंट कोरोनल प्लेन में परफॉर्म किए जाते हैं. नाउ द थर्ड प्लेन इज द ट्रांसवर्स प्लेन. दिस प्लेन इज ऑल्सो नोन एज द हॉरिजॉन्टल और द एक्सियल प्लेन. इट इज ऑल्सो नोन एज द क्रॉस सेक्शनल प्लेन. ये एक ऐसा प्लेन होता है जो बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, द अपर हाफ एंड द लोअर हाफ. Unlike the other two planes like the sagittal or the coronal plane, this plane is parallel to the ground. जबकि हमने पढ़ा है कि sagittal और coronal plane they are perpendicular to the ground, but this plane is parallel to the ground. जैसे आप देख सकते हैं blue area, and it separates the superior from the inferior, the superior part of the body from the inferior part of the body. या फिर हम इसे कहते हैं कि यह हमारे head के sections को हेड एंड ट्रंक के सेक्शन को लेग्स और फीट के सेक्शन से डिवाइड करता है. सो लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्स प्लेन. So whatever rotation we perform, they are generally being performed in the transverse plane. For example, external internal rotation at the hip joint,
at the shoulder joint. Horizontal abduction and horizontal adduction at the shoulders and hip are being performed in this plane only, horizontal plane. Supination, pronation भी horizontal plane में perform किया जाता है. Rotation of the neck to the right and the left and rotation of the trunk to the right and the left, ये सभी movements transverse plane में perform किए जाते हैं. Now axis. Axis is a straight line around which an object rotate. Axis एक straight line होती है जिसके around कोई object rotate करता है. हमारी बॉडी में जब जो भी joints होते हैं उन पर movement जिस भी plane में perform किया जाता है वो एक axis के around होता है. As you can see in this image here, it is depicting the arrows as it is showing here. The arrow is depicting, blue arrow is depicting the rotation of the humerus, internal and external rotation of the humerus. Now this rotation is being performed against the, or it is performed or take place at the vertical axis. ये vertical axis vertical है direction में और इसके around rotation perform किया जाता है, internal and external rotation. Now there are three axes of rotation: sagittal axis, frontal axis and vertical axis. Sagittal axis. It passes horizontally from posterior to anterior. जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, sagittal axis posterior direction से body को पार्ट को intersect करती हुई imaginary line है. This is an imaginary line and it is coming anteriorly. So ये pass होती है horizontally posterior to anterior and it is formed by the intersection of the sagittal and the transverse planes. Frontal axis. It passes horizontally from left to right. जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये body में लेफ्ट और राइट हाफ में बॉडी को डिवाइड करते हुए पास करती है. It is formed by the intersection of the horizontal and the transverse planes. Last is the vertical axis. It passes vertically. आप जैसे इमेज में देख सकते हैं, vertically ये बॉडी को क्रॉस करती है from inferior to superior and it is formed by the intersection of the sagittal and the frontal planes.